write it down in the chat. We'll have someone attend to it. Are we audible? Okay, so we are audible. So we start our third quarter 2024 analyst briefing, which is likely to be the last analyst briefing of FFPL. And the reason why, एक तो मेरी आज आवाज भी थोड़ी सी बैठी हुई है, and the reason why we didn't do it earlier, FFC से आतिफ ने तो 6th को कर ली थी. We were traveling on 6th. We were at FFC plant sites, Mirpur, Mathelo and Gotmachi for 4 days. They were having their annual sports carnival, and FFBL leadership was invited there. Apart from our teams, our head office players participated in the combined head office team, and our plant site team was together with FFC marketing and FFC RM office from Karachi Dolphin ke naam se. So the sportsmen were participating in all the events, and we were also there. It was quite a useful, quite an important event, I'd say, because it was an opportunity to get to know each other, to mingle with each other, to share perspectives. They were great hosts. We can't thank them enough. So I'd say that it's a very wonderful and a marvelous start. बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोले. हॉस्टल्स में हमारे यहाँ से जो प्लेयर गए हुए थे, our girls stayed with the girls. They shared their rooms with them. लोगों ने अपने घरों में हमें गेस्ट बनाया और हम उनके साथ रहे. So couldn't have been better. It's a good start for the merger. We also had our formal launch of the merger project, and we've named it Phoenix. So there is a theme behind it, and that too was a successful event. So we've been quite busy and traveling a lot in the last few days. तो ये कहानी है जी हमारी लेट एनालिस्ट ब्रीफिंग की और मेरी आवाज के बैठे होने की. अच्छा जी, सो इट अपीयर्स कि हमारी शेयरिंग ये आ गई ना मेहदी. Okay, we'll start from here. The disclaimer, as usual, you guys can have a look at it. Our sequence as usual, economic highlights, fertilizer market, and so on and so forth. Economic highlights in fertilizer market. Your file is not being shared. Really? जी, दोबारा करें. तो इसको भी अनशेयर कर लेते हैं, मुझे बता देते ना. आजा भाई. इसको यहाँ हाँ जी, अब शेयर हुई. चलो, तो I'll have to start again. जी, आज का सीक्वेंस, the disclosure, the sequence, economic highlights, fertilizer industry, so on and so forth. We'll start with economic highlights and the fertilizer market. So the CPI has declined. There's a 25% decrease over September to September. Kibor reduced by 660 basis points. Exchange rate has been very stable, which has been very helpful to us. And the rupee actually appreciated by 7% if we compare on a September to September basis. The graph is evident. There was quite some volatility last year, whereas this year things have been moving in the positive direction, and we all have reaped the fruits of the stability. यार ये ऊपर से क्यों नहीं गायब हो रहा? I can't read the headings.
कुछ छोटा कर सकते हैं किसी तरह। इकोनॉमिक हाइलाइट। सॉरी जी, वी वर एट इकोनॉमिक हाइलाइट्स, ग्राफ आपने देख लिया। मूविंग फॉरवर्ड, इंटरनेशनल डेट मार्केट Q2 और Q3 में we see a significant rise in the margin. As you can see that, Kashif, your funny, please. You can see that the phosphoric acid price did not increase much, was almost stable, whereas the DAP prices went up around a $50–$55 increase, and that increased the primary margin. However, if you look at the Pakistani dynamics, FFBL did not take advantage of this increase for two reasons. One, we did not want to increase the DAP price, as that would have been an additional and unbearable load for the farmer. And you'd realize, you must be aware, Agro was selling their DAP at a higher price than FFBL, but we made a conscious choice and we did not increase our price. So the results which we have are without exploiting or taking advantage of this international DAP market price increase. India, their subsidy mechanism was making DAP imports unfavorable for them. Therefore, they stayed out of the market expecting that the price will come down, which didn't. So we saw them quite active in the fourth quarter, but they were quite dormant in the third quarter. China has their own export restrictions. Their price is expected to be stable or a slight increase in the fourth quarter. Supply is constrained. India is buying quite a few 100,000 tons of DAP, but on an overall basis, we don't expect this price to, its fourth quarter is somewhere around 335, 340. So, sorry, $635 and $640. इससे ऊपर जाने के chances कम है. Having a look at the Pakistan market, we saw a 5% decline in the market size over last year. Therefore, the industry closing inventory is at 366,000 tons end of September. FFBL has just got 83,000 tons and quite a few pending orders as well. So actually inventory हमारी इससे कम थी. We saw quite some healthy imports during the third quarter.
So that was another reason the importers felt that the prices are going to rise in the fourth quarter. So they had booked quite some vessels well in advance. That too is the reason why the inventory is there. As far as FBL is concerned, we saw an 8% decline in our sales. It's around 47 to 50,000 metric tons, which by chance coincides with the reduction in market size of 24 as 23. So as the other importers had enough inventory to sell, our market share came down to 55% in the third quarter. And this is the pie chart where overall in the 9-month period, we have managed a 58% market share. Coming to urea, FFC is 43%, FFBL is 8%. So the industry experienced a slight decline in market size, 4.5 million tons as against 4.9, reflecting a 7% decline. Our market share improved by 8%. So it's actually, we got better gas availability. We produced as much as we could, and we pretty much sold out all we produced. Industry inventory has piled up to 600,000 tons. If you remember, last year we were in a short supply position throughout the year, and probably the first and second quarter of this year. So we have ample urea inventory available, though FFBL's inventory is only 26,000 ton out of the 600. So we believe that our sales and marketing teams have done a marvelous job and made sure that we have liquidated all used. Last year, 77,000 tons inventory these weights. So import parity comes down to around 6,400 rupees a metric ton, as against 4,275, which is our retail price. So we are passing on a benefit of over 2,000 rupees a bag to the farmer, despite our gas price being at competitive international rates. Okay. Looking at our operational metrics, 23 versus 24, DAP 444,000. This year we produced 618. Urea 619 as against 571. Last year we had a turnaround and we also managed our opening inventories. We were carrying above 180,000 tons of DAP January 23. So we dialed down our DAP production and we increased urea last year. So this year we took advantage of it. DAP is run full hog, and that's how we produced 619. DAP sales declined by 8%. We've already discussed it. The market shrinkage, but our inventory is very low and it's at a very manageable level. Coming to urea. So the gas availability helped us produce more urea, 383,000 tons in 9 months over 253. So it's 51% increase. And our sales has gone up by 43%. So we sold pretty much whatever we produced. Coming to the business highlights. We couldn't have expected anything better than what we experienced third quarter. Ever highest gross profit, ever highest net profit. Our revenue saw on a 3-month basis, Q3 to Q3, our top line saw an 18% decrease, which was primarily on account of DAP volume based difference. Last year, you'd recall we had a significantly higher, actually ever higher sales in the month of August and significant sales in September. This year has gone pretty normal. So there is a volume variance in the third quarter. Our gross profit, 38% increase from 10 billion to 14, and our profit after tax, 51% increase over last year. And the delta is of 8 billion. And the number is 8 billion. So looking at the 9-month results, ever highest revenue, gross profit and net profit, despite lower
turnover in the third quarter on a 9-month basis. So actually we pre-sold our DAP in the second quarter. So this is how it is. The 23 and 24 bars over here are not on scale, but the other bars are. So like 2019, we started with 44 billion, and here we are at 154. As compared to last year, 9 months, we are 13% up on the top line. Our GP is significantly higher, and our net profit is around 46 times higher than last year. Last year, we barely recovered the loss of first quarter in the second and third. This time around, alhamdulillah, the performance of the first 2 quarters continued in the third quarter. The major players were gas availability. So what it does is, with a better level of gas, our plants run at a better efficiency level. We estimate around 2.6 billion gain net of tax, just out of the gas level efficiency of the plant. So that not only increases our volume of urea, but the efficiency reduces the cost, and therefore urea was also quite profitable this year. So DAP is not the only hero of the story. Okay. Coming to continuing our business highlights. Now here is something interesting. By the end of third quarter, we had a net cash of 43 billion. That's like netting all the cash and cash equivalents with our borrowings. As of today, by mid-November this year, we have prepaid around 12 billion of our long-term loans, which were scheduled to be paid later on. And there is only 1.2 billion left. We intend to prepay all our long-term loans by the end of the year. And therefore, when we merge into FFC, we'll be taking along an unleveraged balance sheet, which will be clear of any and all debts. Our prepayment came in September and October before the reduction in the policy rate. And as you all are aware, that the long-term loans are pegged on a 3-month or 6-month KIBOR. So had we not prepaid these loans, the benefit of a reduced policy rate would not have been achieved for the next 2 to 4, 5 months. So any loan which is pegged in July or August or 1st of September would continue the same rate for the next 3 to 6 months. So that's the advantage we took. So it's not just the unleveraging ourselves, it's also getting rid of the expensive borrowing. I believe this is quite a feat, because if you look at the last 5, 6, or even 10 years, third quarter is usually a bit tight. We carry quite some inventory as the major sales take place in October and November. But it's been like 3 out of 6 years. We've gradually improved our liquidity. We focused more on cash and advance sales rather than offering credits. Even though it was a push sale, it was a pre-season sale, we ensured that it's all on cash. I had just mentioned the gas availability. So last year we received 56% of our allocation, whereas this year we have received 77% of our allocation. Maybe you have an idea how much is the increase in our... Okay. So last year we had received almost 10,000 MMSCF, and this year around we have received 13,000. So इसकी अगर मैं percentage निकाल लूँ, so it's like 37-38% increase in gas availability. Now that's substantial, that's significant, and that is what gets reflected in our numbers. इसी तरह we come to the contribution to government exchequer. So these 9 months alone, we contributed 20 billion. Last year, 12 months basis, पूरे साल में 13 billion था. 6.2 billion. So 9 months is 6.2 billion. Now, to put things in perspective, अगर हम 24 को निकाल दें, तो up to 23,
we had an average government exchequer payment of 7.6 billion, 5-year average, or profit after tax used to be 5 billion. So the contribution to the government was higher than what we were paying to our shareholders or what was being available to the shareholders. इसी तरह हम अगर इस साल को देखें तो 18 बिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीज हुआ और गवर्नमेंट एक्सचेकर में तकरीबन 14 बिलियन का इंक्रीज आया. So it's like end of the day, the government is one of the major beneficiaries, and at times, most of the times, a beneficiary bigger than our shareholder when it comes to running a business in a profitable position. Okay, so we come to the consolidated accounts. 9-month results, last year we were 200 million plus, and this time it's 26.5 billion. And due to the sheer difference, this bar is not on scale. Highest ever, 26.5 billion, 132 times higher. Like, this is phenomenal. Where does this come from? 60% is contributed by FFBN, FPCL 16%, Fauji Foods 3%, last year loss में था, और PMP 11%, इसके ऊपर मैं भी आऊंगा, उस पे भी बात करेंगे, और अस्करी बैंक 10%. So this is the composition of the 26.5 billion. Everyone chipped in, everyone was positive, mashallah, and that is how, alhamdulillah, we've achieved these numbers. Looking at our investments, so PMP gave us a dividend of 1.8 billion this year, 9 months period. Last year nahi tha. Last year PMP had a bad 3 quarters, which reflected in our annual results, but their 4th quarter was good. So this year around they've been positive, and though the last year 4th quarter wiped out their 9 months losses, but this year they've been consistent and steady. Operations are fine. Quite a turnaround as far as the 9 months to 9 months results are concerned. Looking at FPCL, they have a 99% dispatch factor in these 9 months. Last year, they were having a few issues with their plant, a few accidents, I'd call it. So their availability was lower at 75%. They've recovered very well, and they're on track now, safe, reliable, and consistent. In order to bring efficiency in the energy cost, to optimize it, we are mixing the high caloric value, expensive imported coal with the local coal, which is low caloric value. Around 35% plus minus is the mix we've got right now. We do intend to upgrade our facilities, our plant, in the upcoming turnaround, which will help us improve our low cal and high cal coal. We might come up to 50% or so, or maybe even that, higher than that. Fauji Foods was in loss last year and has posted a 598 million net profit after tax. Again, a success story, a turnaround story. We're really proud of them. They've really done a good job. In a market where UHT and processed milk and dairy products are at an overall decline, these tigers actually, that's what I'd call them. They managed to improve their volume, profitability. The EBITDA is up 132%, profit after tax 500%. These guys, I believe, would be holding their analyst briefing somewhere towards the end of this week, I guess, or maybe early next week. So they'll be coming to you and sharing their numbers in detail very shortly. Okay, so enough for the 9 months. Let's see how the 4th quarter looks like. Operations, we expect better than normal, better than historic gas availability. Efforts are in place. It's a daily base activity. We can't relax or we can't let it go. It has to be pushed and tried on a daily basis. Economic conditions may,
इंटरनेशनल प्राइसेस पे बात हो गई, they'll be either stable or a slight upwards. Like fourth quarter, we're seeing something in the range of $635-640 a ton, but then next year, first quarter, we expect a slight downwards trend. Macroeconomic indicators are helpful and are expected to remain stable. Dollar parity looks in good shape. Weather conditions, farm economics will continue to affect our business. The farmers are in a bit under pressure. The wheat sale of last year, this time around, the government is not buying much from them, and even the support price is not as good as it was earlier. So the farmer is a bit tight as far as their economics are concerned. That is why I mentioned earlier, we did not increase our DAP price, and we thought we should play our part in supporting them. Subsidiaries from their performance is expected to continue to remain good and profitable, if not better than what they've done already. And when we talk of outlook, the amalgamation with FFC is a major topic. So we had our board approvals, CCP approval has been received, scheme of arrangement has been approved by the board, submitted to the High Court. We held an EOGM on the 4th, you are aware of the results. Next hearing is on 18th November, as I had mentioned in the EOGM. So let's see, we've yet to receive SCCP responses. The court will analyze them, and should they be asking for further information, we might have a few more hearings after the 18th. We can confidently say that we are very hopeful that the merger will be concluded before the year ends. So this is how it goes. The scheme of arrangement says that the effective date of the amalgamation is 1st July 2024. So the second half of 24 is FFC's. So it should be approval come by end December. The annual accounts would be of the amalgamated entity. FFBL accounts probably third quarter was the last time, hopefully, inshallah, that they came out separately. So that's how we expect things to go. Pretty confident. Baki aage Allah behtar jante hain. This is how we come to the question and answer. Before we allow them to unmute, would you like to address the chat questions first? जी हम अनम्यूट करेंगे नहीं यार, Zoom पे मुश्किल हो जाता है. So what is the expected market size? Anything between 1.5 to 1.6 million DAP, 1.55. It is yet to be seen because November का महीना भी important है. अगर ये गुजर जाता है, we have already sold as of today. हमारी November की सारी production has been sold out. So एक महीना रह गया पीछे. So we're confident not to carry any significant inventory. कोई 10-20-25 हजार टन जो पाइपलाइन में होता है वो रह जाएगा at best. तो ये तो है हमारी सूरत हाल. अच्छा अभी होगा ये कि जब हमारा प्रोडक्ट सोल्ड आउट होगा, तो दैट्स वेयर एंग्रो के पास भी कुछ ज्यादा इन्वेंट्री नहीं है. इन्वेंट्री तो इंपोर्टर्स के पास है, प्राइवेट इंपोर्टर्स के पास, वो आर द नॉन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फर्टिलाइजर. तो आखिरी विंडो में नवंबर दिसंबर में दोस गाइज विल आल्सो ट्राई टू पुश देयर प्रोडक्ट एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. अब ये मार्केट साइज हमारे लिए रेलेवेंट नहीं रहता अगर हम अपनी सेल पूरी कर लेते हैं. टर्न अराउंड का एक सवाल आया. यस, वी हैव अ टर्न अराउंड इन जनवरी. इसमें यूरिया की एक मेजर जॉब है, वो महीना डेढ़ इवन सवा महीना डाउन रहेगा. We are trying to keep the ammonia turnaround as short as possible. DAP भी 2-3 हफ्ते में तैयार हो जाएगा, तो अमोनिया भी 3-1 हफ्ते का डाउन टाइम देख रहे हैं. But then again it depends कोयटा में, बलूचिस्तान में सर्दी कितनी होती है, कितनी गैस उधर डाइवर्ट होती है, अवेलेबल कितनी है और हमें कितनी मिलती है. So we लास्ट ईयर या 2024 के शुरू में दिसंबर और 24 का जनवरी हमने अच्छा गुजारा है. तो कोशिश हमारी यही होगी कि SSBC से हम जितनी गैस हो सके 30 MSCFT 40-50 जितनी हो जाए हमें जनवरी में थर्ड वीक से मिल जाए,
ताकि हम अपनी DAP की और अमोनिया की प्रोडक्शन शुरू कर लें। डीलर ट्रांसफर प्राइस पूछी है किसी ने। DAP की डीलर ट्रांसफर इज 11,623, यूरिया की इज 4,325, और इसमें अगर हम MRP देखें तो DAP की इज अराउंड 11,981 और यूरिया की है 4,450। अब ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड प्राइसेस हैं। मार्केट सिचुएशन को देखते हुए we understand that some dealers are selling it even cheaper than what we recommend. So that's the demand and supply situation. Phosphoric acid, Q4, we just received a confirmation like a week ago. So they've increased the price. It's gone up to $1,060 a ton. So they are following the DAP price increase trend. We were lucky in the third quarter कि वो price पहले determine हो गई, DAP बाद में चली. So this is the time when the acid suppliers will take some advantage out of it. Indigenous coal mix, ये मैंने आपको बता दिया था, 30-35% कुछ इस रेंज में रहता है, ऊपर नीचे जाता है, लिमिटेड है, बाकी इसमें भी इशू ये है कि इंडिजिनस कोल जो है ना वो या हमें थर से मिलता है या आसपास की माइन से, लोकल अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। थर वाले जो है वो उनका सोल्ड आउट होता है, बहुत थोड़ा वॉल्यूम मिलता है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज we are importing low cal coal, because if you recall, when I was mentioning this mix, I did not say indigenous coal. I said low calorie versus high calorie. So what we're doing is we are importing low calorie, lower cost coal and then mixing it. So once third coal phase 2 is available, we'll be moving on to the indigenous, but till then we are using imported low calorie coal. प्लांट अवेलेबिलिटी FPCL की पूछी आपने थर्ड क्वार्टर में, 100% थी, मैंने 99% उनका आपको मेंशन किया। टोटल फ्यूल कॉस्ट में व्हाट इज FPCL शेयर, और फ्यूल कॉस्ट सारी उन्हीं की है तकरीबन। वो टर्न अराउंड पे जब वो डाउन होते हैं तो हमें थोड़ी बहुत लेनी पड़ती है RLNG रेट पे, अदरवाइज 85-90-95% की रेंज में चलता है उनका जो अवेलेबिलिटी है। ओके, so someone is asking what was the average recorded price of phos rock. भाई साहब, रॉक में हम डील नहीं करते, एसिड की प्राइसेस क्वार्टर वाइज मैंने दिखा दी, अगले की बता दी है। What is the DAP demand in 25? Well, depends on where we close this year. अगर हम 1.6 या इससे थोड़ा ऊपर चले जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर अगेन फार्म इकोनॉमिक्स देखनी है, वेदर कंडीशंस देखनी है, फार्मर की जेब कितना लोड उठा सकती है, because end of the day these guys compromise on DAP rather than compromising on these. वो रेशियो पहले ही उनकी इतनी फेवरेबल नहीं है, वो फर्दर खराब हो जाती है। इस दफा मेरा ख्याल है स्वाय शुगर केन के, कॉटन में, राइस में और वीट में फार्मर को मार पड़ी है, पोटैटो में मार पड़ी है, तो उनकी इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छी लग नहीं रही है। So it's too early to predict next year's market size. Okay. Any plan of setting up a new DAP plant to capture imported DAP share? We have been studying quite a few options. Setting up a new DAP plant was one option, but then this will not be the only item under consideration. We are looking at quite a few other options as well. अभी कुछ materialize नहीं हुआ, जो ही होगा हम आपको publicly announce कर देंगे। September 24 में FBL का 7 बिलियन लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग था और शॉर्ट टर्म 3 था, 10 बिलियन था। इसको मैंने आपको बता दिया। वो एट टाइम्स पीरियड एंड पे हम थोड़ा सा लोन कैरी करते हैं शॉर्ट टर्म में, बट देन वी गॉट एम्पल कैश ऑन द अदर साइड। बट ऑन अ नेट बेसिस, एज आई सेड अर्लियर, 42 बिलियन पॉजिटिव कैश है हमारे पास। When you say is this 42 billion net of GIDC liabilities, ओ भाई नेट कैश जो है ना वो बोरिंग से नेट होता है, तो GIDC से ताल्लुक नहीं है। GIDC के ऊपर तो हमारे पास 22 बिलियन की लायबिलिटी है, तो दूसरी साइड पे GST का रिसीवेबल भी है और सब्सिडी भी है। तो the way we look at it is both of them knock off each other pretty much. So that's how we look at it.
Okay, what is the reason of PMP inconsistency? Expectations going forward. अच्छा, अब PMP में होता ये है, हमारा जिस तरह PMP के साथ एक arrangement है, so PMP gives us a price on a quarterly basis. We as FFBL are vulnerable to DAPS price fluctuations during the quarter. So उनकी price fix हो गई, अब हम ऊपर नीचे चल रहे हैं. अगर अपसाइड आ गई, जिस तरह Q2 में आई है, 3 में आई, तो वो अपसाइड हम अगर कैप्चर कर सके तो कर लेंगे, ना कर सके तो मिस हो जाएगी. इसी तरह PMP का इस तरह है कि उनका भी पीछे फॉस्फॉक का सप्लाई एग्रीमेंट है. They work on an annual basis, and during that year there is a provisional pricing. So what happened last year? The ROC's provisional price was high and the phos acid price was very low. So they had to suffer for 3 quarters. However, 4th quarter में आके जब उन्होंने उसको annualized basis पे actualize किया और final price दी suppliers ने, so that turned out to be positive. तो उनके मॉडल में annualized number जो है वो सही पिक्चर रिफ्लेक्ट करते हैं. अच्छा, इसी तरह है जैसे FFBL है, कमोडिटीज में हर जगह ऐसे ही होता है, FFBL का भी ऐसे ही है. So in a normal year, we'll be producing throughout the year, whereas 60% of the sales take place in the last 3 to 4 months. So whatever happens in the first 5, 6, 7, 8 months does impact us as far as the acid cost is concerned. Now let's suppose the DAP price is higher in the first 3 quarters, we have a higher acid price, हम प्रोड्यूस तो उसी लेवल पे कर रहे हैं. अगर Q3, 4 में आके DAP प्राइस गिर जाती है, that's where the importer imports. So even if we have produced at a higher cost, we won't be able to sell at a higher price. We've got to sell at the going price. Now we are naturally hedged in a way that this last 4 months is the time frame when the importers import, is the time when India is also importing DAP. So usually most of the time DAP की prices अच्छी होती हैं towards the end of the year. Number 1. Number 2, अगर रूपी डॉलर पैरिटी कंसिस्टेंटली मूव कर रही हो तो जैन टू दिसंबर या फर्स्ट क्वार्टर टू फोर्थ क्वार्टर डॉलर की पैरिटी थोड़ी सी, रूपी थोड़ा सा डिवैल्यू हो गया होता है. एंड आई एम टॉकिंग ऑफ अ वेरी एवरेज नॉर्मल ईयर व्हिच इज नॉट सो नॉर्मल. तो उसमें उस पैरिटी का भी फर्क पड़ जाता है. इंपोर्टर को अगर प्राइस डॉलर टर्म्स में कम है तो रूपी टर्म्स में थोड़ी ज्यादा पड़ जाती है. तो दैट इज हाउ आवर बिजनेस मॉडल इज नेचुरली हेज्ड. Having said that, our business model is very vulnerable to the cyclical movement of commodities globally. So is PMP. तो उनका भी मॉडल साल के साइकिल पे चलता है. FFBL का भी हम हमेशा आपसे यही कहते हैं, आप हमसे बेहतर समझते हैं. इसका एक्चुअल रिजल्ट, मीनिंगफुल रिजल्ट दिसंबर एंड पे होता है. So having a loss in Q1 2023 does not mean we'll end up with a loss at the end of the year. Or having a bumper profit in the first 2 quarters of 2022 does not mean the trajectory will continue in the next 2 quarters. So हाँ, 24 में I'd say कुछ हमने अपनी एफर्ट की और कुछ हमें अपॉर्चुनिटी मिली. So we grabbed the opportunity and we tried to take the most advantage out of it and sell earlier, sell on cash, avoid credit. The market was supportive. Our efforts were there. So quite a few factors work together. हमारा काम है कि as management हम situation को देखते हुए on a weekly basis, day to day basis, month on month basis, इंटरनेशनल मार्केट को एनालाइज करें, लोकल मार्केट को एनालाइज करें, अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करें और उसकी बेस पे अपनी सेल्स और प्रोडक्शन की स्ट्रेटेजी को ट्वीट करते रहें और उसको एग्जीक्यूट करें. So this year around, and this is a very unusual year, आप पिछले जितने साल देख लें, you'd hardly come across many years जहाँ पे आपको consistently पहला क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर भी अच्छा नजर आए. जनरली 1-2 क्वार्टर बुरे गुजरे हैं तो अगले अच्छे हो जाते हैं, अगर पहले अच्छे गुजर जाए तो बाद में बुरे हो जाते हैं. तो हमने अपनी कोशिश पूरी की है अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला की तरफ से हालात भी कुछ साजगार थे, तो we've done well, we've done exceptionally well. वो सारा क्रेडिट मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आगे चल के पता नहीं क्या होगा, पर हमारे पास में एफर्ट है एंड दैट वी डिड. और अल्लाह का शुक्र है हमने एफर्ट में कोई कसर नहीं छोड़ी. ओके, पीएमपी का सवाल था, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस गोइंग फॉरवर्ड. पीएमपी गोइंग फॉरवर्ड हम समझते हैं उन्होंने भी अपने प्राइसिंग मैकेनिज्म में लास्ट ईयर की वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी को देख के थोड़ा सा ट्वीकिंग की है.
So we expect not to see such volatility in PMP's results as we saw in 2023. So we can expect a consistent movement in their results. What would be the expected market size for urea this year? 6.5 million टन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फार्म इकोनॉमिक्स को देखते हुए। फार्मर डीएपी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करता है, यूरिया पे कम करता है। यूरिया का उतार चढ़ाव ज्यादा डिमांड सप्लाई से आता है। व्हेनेवर इट्स शॉर्ट मार्केट में ब्लैक हो जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि फार्मर कंज्यूम ज्यादा कर रहा है। और जब लॉन्ग सप्लाई है जिस तरह है, एवरीवन इज कंफर्टेबल की इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो कोई मारदार नहीं है, लोगों ने स्टोर नहीं की, होल्ड नहीं की, 6 लाख टन से ऊपर पड़ी हुई है। तो उससे सिर्फ ये फर्क पड़ रहा है कि फार्मर को रीजनेबल प्राइस पे, कंट्रोल प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रहा है। यूज पे जितनी हमारी स्टडी है, फार्मर इसकी यूज पे कमी नहीं करता, वो इस्तेमाल उतना ही करेगा जितना उसने करना है, टैप पे कॉम्प्रोमाइज करता है। और पिछले सालों में अगर मार्केट साइज हमें बड़ा नजर आता था तो वो जरूरी नहीं है कंजम्पशन बेस्ड हो, वो इसलिए भी है कि वट एवर प्रोडक्ट वॉज अवेलेबल, पीपल वर ट्राइंग टू होल्ड इट सिंस दे कांट गेट होल्ड ऑफ इनफ प्रोडक्ट, तो एक सेंटिमेंट बन जाता है। तो सेंटिमेंट की वजह से उस साल की ऑफटेक बढ़ जाती है। फार्मर लेवल पे हमारा नहीं ख्याल के कोई सिग्निफिकेंट चेंज इसमें आ रही है। अच्छा जी, so someone is moving ahead, looking too far into the future and asking, can SSP sale from Agritech bring competition to market as farmer economics disturbance shift towards low cost products? Please comment. देखें, DAP की अपनी मार्केट है, SSP की अपनी है। SSP Agritech बेच रहा था तो तब और अब में कोई ऐसा फर्क नहीं है, अब हम उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। That would be joint venture model. We expect there is a likelihood कि उनकी मार्केटिंग भी FFC मार्केटिंग ओवरसी कर रही है, तो मिल के कर लेंगे। तो once you got another product into your portfolio, that brings in synergy. So it is our job to make sure कि वो counter productive ना हो जाए। That's what we look at. That's how we look at it. Okay. Q3 is FFCL group contact with government to pursue sale of unutilized RLNG to group which are 100% allocation or even above for export purposes of excess inventory from additional quota. यार RLNG की प्राइस आपके में है, RLNG से यूरिया बनाना तो वारा नहीं खाता, अब उस पर गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी होती है, गवर्नमेंट की मजबूरी है, उसकी IMF की प्लान है और उसने अपनी बास्केट में उसको लॉस को मैनेज करना होता है। तो when we see a pool of gas available, yes, that's how we manage to get higher gas this year. हम कोशिश तो करते हैं हमें दे दें और हमारी नोटिफाइड प्राइस पे ही दे दें, तो लेकिन RLNG चूंकि महंगी होती है, तो honestly the government should be and is looking at customers who are willing to pay RLNG price. On a reduced rate is not a priority for them. और इसी तरह उससे एक्सपोर्ट करना और वो सब करना, एक्सपोर्ट थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अगर हम यूरिया की बात करें, हम 2000 रुपए अगर सस्ते हैं और फिर एक्सपोर्ट करेंगे, किस प्राइस पे करेंगे, उसका बेनिफिट किससे कितना शेयर करेंगे, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। बट वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद देम, अगर कभी कोई प्लान आता है तो देख लेते हैं। अभी तो इंपोर्ट हो रही है यार, पिछले क्वार्टर में दूसरे में शायद इंपोर्ट हुई थी, साल इंपोर्ट होती रही है, तो वो हमारा ही दिलेमा है, कभी इंपोर्ट होती है फिर अचानक एक्सेस हो जाती है। एक्सेस इन्वेंट्री सूट्स द गवर्नमेंट, सूट्स द फार्मर, because that ensures the black marketing now, or to an extent it suits us also. हम गवर्नमेंट को हमेशा ये कहते हैं कि हमें गैस अवेलेबल करें, पाकिस्तान में प्रोडक्शन कैपेसिटी रिक्वायरमेंट से थोड़ी ज्यादा ही है, let us produce, let us build inventory, let's ensure the middleman does not take advantage of the shortage, and let the farmer take advantage of what we are offering them and what the government thinks they are offering them. अभी तो ये प्राइस सब्सिडाइज नहीं रही ना, 1500-1600 रुपए के करीब अगर हमारा फीड है तो वो सब्सिडाइज तो ना हुआ, $5-6 PP 12 के रेट पे तो गैस मिल रही है। तो अब वो गवर्नमेंट का क्लेम कि हम सब्सिडाइज कर रहे हैं वो खत्म हो जाता है। तो पहले भी माड़ी वाली गैस भी वो सब्सिडाइज नहीं कर रहे थे, जितने पे माड़ी बेचता था उतने पे ही हमें मिलती थी। तो अब सब्सिडी वाला क्वेश्चन बाहर है, हम जो एडवांटेज दे रहे हैं क्या एक्सपोर्ट की सूरत में गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है।
So you guys want to know what is FPCL share in raw material costs. So my brothers and sisters, FPCL तो वैसे ही स्टीम और पावर बनाता है, वो रॉ मटेरियल नहीं है. टेक्निकली वी डोंट कंसिडर इट एज रॉ मटेरियल. यूरिया में गैस होती है और डीएपी में अमोनिया गैस है, और डीएपी में अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड होता है. उसके अलावा हम किसी भी चीज को टेक्निकली रॉ मटेरियल नहीं कंसीडर करते. व्हाट इज इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट फार्मर सब्सिडीज और स्कीम्स? वेल, अगर स्कीम्स आती हैं तो उसका फार्मर के लिए है, फार्मर को फायदा होगा. फार्मर सौखा होगा तो वो खाद अच्छी यूज करेगा और पूरी यूज करेगा. किसान कार्ड ऑलरेडी तो अभी उन्होंने किसान कार्ड वाली जो स्कीम चलाई हुई थी, हमने सोना सेंटर पे उनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और द फार्मर इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट फैसिलिटी. तो ये तो जितना गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे या कर सके ओवर द पीरियड, ये एक हिसाब से अच्छा हो गया कि गैस की प्राइसेस इन्होंने इस लेवल पे ले आए हैं कि वो सब्सिडी वाला शोर और वो रोला खत्म हो जाए. एज फार एज लोकल प्रोडक्शन ऑफ नेशनल गैस इज कंसर्न. आरएलएनजी अगर ज्यादा आ जाती है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो गवर्नमेंट का इशू है. जब अग्रीमेंट किए थे उस वक्त देखना चाहिए था. अब आरएलएनजी अगर बढ़ गई है और इनकी एवरेज प्राइस बढ़ गई है तो इट्स ऑन टू देम. So as far as we are concerned, there is no subsidy on gas price by the government to the manufacturers. And if there is any advantage being passed on to the farmer, that's on account of us, the producers. अगला सवाल, will the merged entity be Sharia compliant, or would you strive to comply, or is it not the management concern? Now, देखें, आज से 2 साल पहले हम भी शरिया कंप्लाइंट नहीं थे, तो मैनेजमेंट का कंसर्न था. We made a very conscious effort in FFPL and we worked hard for it and eventually we achieved this level. अब FFC पे कुछ मसले आते हैं, merged entity पे of course हमारी कोशिश पूरी होगी, हम वो करें. मसला ये आता है कि when you're cash rich, आपने वो कहीं ना कहीं प्लेस करना होता है, उस पे आती है अदर इनकम. वो अदर इनकम का प्रोपोर्शन जब आउट हो जाए तो फिर आप शरिया कंप्लायंस के रूल से आउट हो जाते हैं. तो देयर आर, नंबर 1, मार्केट में अगर आप बोरिंग साइड पे हैं तो शरिया लेंडर्स में डेप्थ होनी चाहिए, हमें वहां से मसला आता है. इसी तरह जब हम एक्सेस कैश में हो तो फिर हमारे पास डिपॉजिट की म्यूचुअल फंड्स में हम जाएं, बैंक डिपॉजिट्स में जाएं, तो वहां इतनी एपेटाइट होनी चाहिए. एंड ऑफ द डे we try to make the best out of the situation for our shareholders. तो हमें तो जहां से 1 पैसा 2 पैसा बचते होंगे नजर आएंगे, हम तो उधर ही उसको लेकर चलेंगे. So we'll always like to remain Sharia compliant as far as shareholder का interest compromise ना हो और bottom line पे उसका impact ना आए. तो bottom line भी ठीक रहे और compliance भी हो जाए, ये तो है best case scenario. अब आप जब शरिया compliance पूछते हैं तो yes, it's Islamic mutual funds and others who buy and retain those shares. So I understand for you guys and for the shareholder, it's the pricing. If these funds are in the market, in the play, it helps support a higher share price. That could be one way of helping the shareholder while taking a slight hit on the P&L. Well, that is something which can be considered. But we'll have a look at it once merged. क्योंकि आप देखें हालात किस तेजी से तब्दील हो रहे हैं. FFPL ने साल शुरू किया, मेरे ख्याल है 18 बिलियन का तो हमारा लॉन्ग टर्म लोन था. आप ईयर एंड के ऊपर 4.5-5 उसमें से दे दें. वी शुड हैव एंडेड द ईयर बाय 13 अरब का लोन. क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आपके सामने है. तो we try to change, to adapt and to move according to the situation. So when we saw that the cash is ample, एक क्वार्टर गुजरा, दूसरा गुजरा, और आप लोग हमारी पोजीशन को अप्रिशिएट करें. मैंने जो 2022 की मिसाल दी आपको, 2023 की मिसाल दी, तो जितने आप लोग कंसर्न होते हैं बिजनेस के रिजल्ट से, उतने उससे ज्यादा नहीं तो उतने हम भी हो गए. सो दिस इज व्हाई वी वर वेरी कॉशियस दिस ईयर. अदरवाइज हम जून में प्रीपे कर सकते थे. बहरहाल हमने कहा 1 क्वार्टर और गुजारते हैं, जून के बाद आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ट्रेंड किस तरफ जाता है. वंस वी वर कॉन्फिडेंट कि मार्केट हमारे फेवर में मूव कर रही है और हमारी एफर्ट्स का फायदा हो रहा है और लिक्विडिटी चल रही है और हमारी इन्वेंट्री लिक्विडेट हो रही है और हम मेजर इन्वेंट्री कैरी नहीं कर रहे, so that's when we came in action and we offloaded all these loans. You should also appreciate, and you would appreciate,
this is a time where banks are striving to have assets on their balance sheet. They are really striving to ensure कि उनके पास अच्छी credit rating के borrowers हों जिनको वो lend करें. इस market में बड़ी amounts prepay करना long term loan पे was not an easy task. It was a difficult battle because when we are in a difficult situation, those lenders bail us out, they help us out. So when they were in a difficult position, we were expected and supposed to be very supportive. So we tried to convince them, and it was very gracious of them that they agreed that we would like to unleverage our balance sheet. Right. So, Ji, Right. what is safe shelf life cycle of DAP? 8-10 महीने 12 महीने आराम से रख लेते हैं यार, कोई मसला नहीं है. 12 से ऊपर भी चल जाता है. देखें, हाँ, it depends on the conditions where you store it. So अगर आपकी warehousing ठीक है, अगर बारिश से आप दूर हैं, moisture से आप दूर हैं, और आप उसकी stacking भी इतनी कर रहे हैं, आप उसकी stacking भी prescribed level तक करते हैं. अच्छा, now it's a chemical product. So हमें ये पता होता है कि इसमें कितना moisture हो, कितनी stack height हो, तो ये कितना अरसा अपनी शेप मैनेज कर लेता है. अच्छा, अगर मॉइस्चर ज्यादा भी हो जाए, स्टैक हाइट ज्यादा हो जाए, तो उसमें नुकसान सिर्फ ये होता है कि ये जम जाता है, दलियां बन जाती हैं. इसकी एफिशिएंसी और एफिकेसी नहीं कम होती. अब वो फार्मर को तोड़नी पड़ती है, इंटेंसिव तोड़ते हैं. वो पानी में अगर डालना हो तो फिर तो आसान है, लेकिन अगर उन्होंने ड्राई उसका छक्का मारना है तो उसके लिए उसका अपनी शेप में होना जरूरी है. उसके लिए हम इसके ऊपर कोटिंग करते हैं, which is a significant cost, runs into billions of rupees a year. तो वो कोटिंग डिजाइन होती है कि एक रीजनेबल लेवल के मॉइस्चर पे अगर 20 से का मेरे ख्याल स्टैक साइज है, इस पे आप रखें तो वो कोई मसला नहीं है. 1-1.5 साल आराम से निकाल जाता है. 18 महीने मेरे ख्याल है वो उसकी थ्योरेटिक लाइफ है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस वेयर इट्स केप्ट. आपने आज तक इशू नहीं आया जी, और हमें आज तक कोई ऐसा इशू नहीं आया. ये कोटिंग हमने शुरू की है 2020 से, इफ आई रिकॉल करेक्टली. तो उससे पहले 2019 में थोड़ा सा गिला आया था, मार्केटिंग वालों से थोड़ी कंप्लेंट्स थी, बट देन वी मेड श्योर दैट इफ वी गॉट अ सुपीरियर ब्रांड, we are proud to have a Pakistani brand which sells at a price higher than imported product. You don't find many items on the shelf where people take this price. So we do, and we always strive to maintain the level of quality of the product we deliver to our customers. So I guess that's the last question. Thank you very much, ladies and gentlemen. ठीक हो गया जी. So this is all we have. इंशाल्लाह फिर कभी किसी मौके पे आरिफ साहब और मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगे. I wish this could have been in Karachi. Our schedule was very tight. हम नहीं आ सके आपके पास, पर हम और FFC एक हो जाएंगे. We all are really grateful and thankful to our shareholders and all the analysts. मेरा तो आप लोगों से मेरे ख्याल है 2010-11 से इंटरेक्शन रहा, तब से अब तक पता नहीं कितनी जनरेशन मूव कर गई. बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर हैं, बहुत सारे लोग जो एनालिस्ट थे उन्होंने अपनी ब्रोकरेज हाउसेज या एडवाइजरी खोल ली. कुछ मुल्क से बाहर भी हैं जिन्होंने ये अपना सिलसिला चला लिया. तो we'll be around. In any case, we could advise or help anyone. Please feel free to contact us or anyone else around us if you've got their contact numbers. Thank you very much once again. You guys have been very patient and supportive with FSBL during thick and thin. We've seen a few marvelous years and a lot of challenging years, but you guys have been with us. Thank you very much for everything. That's it, ji. Assalamu alaikum.